live pictures coming in from Delhi. I expect if state governments also go into the scheme, as a result, we will be able to have additional consumer demand generated to about 8,000 crores of rupees. So this, in fact, between these two, the Leave Travel Concession and the Leave Encashment, which go as one of the package, and two is this festival advance, which we are resurrecting this time under the 7th Pay Commission, but this Pay Commission did not make a provision for it, but we are now creating it as a one-time offer and making it available for all government employees, not just for the non-gazetted ones. So that is towards the consumer spending. Now if I go to explain the capital expenditure, we finished with the background, we finished with the consumer spending, two items. Now we look at capital expenditure, where we are talking both of the states and center. I'll explain the states first and then the center, although this one shows center and states. Center and the states, two components. I explain the states one first. In that capital expenditure, as you all know, money spent on infrastructure building and anything which goes for building capital, in the sense of building assets, has a greater multiplier effect in the economy. It not only raises the present day GDP, the current GDP, but also has an impact on future GDPs, and therefore it is a far more attractive multiplier creating expenditure that any government can undertake, and it also in the long run makes debt far more sustainable. So we want to now give a new thrust for the capital expenditure, both for the states and center. I will now speak of the states. The introduction be given by Anurag ji. धन्यवाद वित्त मंत्री। कैपिटल एक्सपेंडिचर यानी कि पूंजीगत व्यय जो केंद्र और राज्य की सरकारों की इस पे बात करने जा रहे हैं, ये हम सब लोग जानते हैं कि पूंजीगत व्यय का गुणक प्रभाव होता है। कैपिटल एक्सपेंडिचर हैज अ हाई मल्टीप्लायर इफेक्ट, और इससे न केवल हमारे वर्तमान सकल घरेलू उत्पाद को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि भविष्य के भी सकल घरेलू उत्पाद को बल मिलेगा, बढ़ावा मिलेगा, और जो हमारा कर्ज है वो ज्यादा सतत होगा। इससे राज्य की सरकारों को और प्रदेश केंद्र की सरकार को एक और गति मिलेगी, बल मिलेगा कैपिटल एक्सपेंडिचर करने के लिए, और ये पूंजीगत व्यय कुल मिला के जहां देश का एक और इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में मददगार होगा, वहीं पर हमारी अर्थव्यवस्था को भी बल देगा। So we now come to the proposal of providing special assistance for the states. We issue a 50-year interest-free loan to the states for capital expenditure exclusively, and to the total of 12,000 crores. So this will be an interest-free 50-year loan being offered to the states, and this has three components. This 12,000 crore gets split in three parts. The first part relates to 2,500 crore for all the northeast states, which means, and for Uttarakhand and Himachal Pradesh. The northeast states alone will get 1,600 crores, which means the 8 northeast states will get 200 crores each for the next 50 years without interest. And Uttarakhand and Himachal will get 450 crore each for the next 50 years without interest. That's part one, totaling 2,500 crores. Part two of this 12,000 crore that we are announcing will relate to all other states which are not covered in the part one, which is the 8 northeastern states and 2 Uttarakhand and Himachal. So the rest of them are getting covered in this. This has a total of 7,500 crores, which will be divided
in proportion to the share that they have as per the Finance Commission's devolution. So states can spend this money on capital projects. 50% will be initially given to them, and the rest 50% after the first 50% is utilized. But this total amount of 7,500 or the 2,500 for the Northeast, all of which will have to be spent by 31st March 2021. They will, please go back to the old slide. They will have to spend it by 31st March 2021. After the first 50% is spent, you get the second 50%, and that is therefore the part 2 that applies to all others also. Part 3 of the 12,000 crores being given to the states for 50 years is, now you have from the 12,000 crores, 2,500 gone to the Himalayan state, 8 plus 2, 7,500 gone to all states, but 2,000 will be for those states which, if you recall, I had during the Atmanirbhar package announcement, linked some of the performance related incentives for borrowing. Now, whether that is happening or not, I've released that 0.5% which we had given as additional borrowing flexibility. Having delinked that, here I am telling you 2,000 crores will be kept for those states which fulfill at least 3 of the 4 conditions that we put. In the, I think the notification came in May sometime, that very clearly spelt 4 different reforms which states will have to undertake, like the one nation, one ration card, power sector reforms, and also some urban development, urban local body related reforms and so on. If from among the 4, you are able to do 3, from this 2,000 crore, states will have money given to them as interest-free loan for the next 50 years. So this 12,000 crore interest-free 50-year loan for the states have 3 components. First component is for the Northeast and Uttarakhand and Himachal. Second component is for all states, but entirely to be spent only on capital expenditure. Now we move to the next slide. This can be used for new or ongoing capital projects if they need funds. You can settle contractors' bills with it. You can settle suppliers' bills with it. Even pending bills can be paid with it. But it has got to be paid all before 31st March 2021. And this loan is over and above all other additional borrowing ceilings which have been given to the states. It has therefore got nothing to do with the rest of the borrowing ceilings which have been given. So the payment will be a bullet payment after 50 years. No servicing is required till then, neither for the principal nor for the interest. मुझे लगता है ये राज्यों के लिए एक बड़ी अहम घोषणा है जो माननीय वित्त मंत्री जी ने आप सबके सामने रखी कि पूंजीगत व्यय में वृद्धि करने के लिए राज्यों को किस तरह से सहायता मिल सके, और इसमें विशेष व्यवस्था की गई है कि ब्याज मुक्त 50 वर्ष के लिए 12,000 करोड़ रुपए का कर्ज राज्य की सरकारों को दिया जा रहा है। 50 वर्षों के लिए ब्याज मुक्त 12,000 करोड़ रुपया पूंजीगत व्यय करने के लिए राज्यों को इसके माध्यम से दिया जा रहा है। और जिसकी मांग आप बार बार करते थे कि कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ाएं, इससे राज्यों को बल मिलेगा। और इसका जो पहला भाग है उसमें नॉर्थ ईस्ट के राज्यों को 1,600 करोड़ रुपए मिलेंगे। और प्रधानमंत्री मोदी जी सदा कहते थे हमें लुक ईस्ट की बजाय एक्ट ईस्ट में जाना है, और हमने वो करके दिखाया है। और माननीय वित्त मंत्री जी ने जो अभी घोषणा इस पे की है कि 1,600 करोड़ रुपया 2,500 करोड़ में से 1,600 करोड़ रुपया केवल नॉर्थ ईस्ट के 8 राज्यों के लिए जाएगा,
और उत्तराखंड और हिमाचल के लिए 900 करोड़ रुपए का प्रावधान इसमें किया गया है। इससे बल इन पहाड़ी राज्यों को मिलेगा। पूंजीगत व्यय करने के लिए एक्सपेंडिचर जो कैपिटल पे किया जाए, इस पे किया जाएगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर किया जाएगा उसके लिए। और इसका जो दूसरा भाग है वो लगभग 7500 करोड़ रुपया बाकी राज्यों के लिए रखा गया है। जिस तरह से फाइनेंस कमीशन के हस्तांतरण के लिए जो पूरी डिटेल्स आती हैं उसके अनुसार किया जाएगा। आधा हिस्सा इसका 7500 करोड़ का पहले शुरुआत में दे दिया जाएगा और जो बाकी है उसको पहली इंस्टॉलमेंट जो 50% है उसका इस्तेमाल करने के बाद दिया जाएगा। और अगर कुछ भाग इसका खर्च नहीं होता है तो उसको भी रीएलोकेट करने का इसमें प्रावधान अलग से रखा गया है। जो इसका तीसरा पार्ट है 2000 करोड़ रुपए का, आपको याद होगा आत्मनिर्भर पैकेज के समय एफआरबीएम एक्ट के अनुसार जो 3% राज्यों के लिए प्रावधान है उससे ऊपर भी 2% खर्च करने की सुविधा दी गई। और 4 जो इसमें शर्तें थी उसमें से 3 को जो पूरा कर लेता है उनको ये अतिरिक्त 2000 करोड़ रुपया राज्यों को मिलेगा ताकि वो बदलाव रिफॉर्म्स भी अपने राज्यों में लाएं, उनके राज्यों का भी भला हो। और जिन्होंने अच्छे रिफॉर्म्स कर दिए होंगे उनके लिए 2000 करोड़ रुपये उपलब्ध रहेगा और इसका वो सदुपयोग कर पाएंगे। इस पैसे को कहां खर्च किया जा सकता है? राज्य इसको किसी भी नए प्रोजेक्ट के ऊपर या कोई चालू जो अभी वर्तमान कोई प्रोजेक्ट है उसके ऊपर, और इसमें चाहे ठेकेदारों के बिल की पेमेंट करनी हो, सप्लायर के बिल की पेमेंट करनी हो, उन सब की पेमेंट इसके माध्यम से की जा सकती है। कोई नया प्रोजेक्ट आना हो, मान लीजिए छोटे राज्य नए प्रोजेक्ट लाने में ही डरते थे कि उनके पास कैपिटल एक्सपेंडिचर करने के लिए पैसा नहीं होता था, तो उनको भी और बड़े राज्यों को भी इससे बल मिल पाएगा। और इसमें 31 मार्च 2021 समय सीमा रखी गई कि उसके पहले आपको ये खर्च करना होगा। जब इससे पहले खर्च होगा तो अर्थव्यवस्था में जब पैसा आएगा तो इससे और गति अर्थव्यवस्था को मिलेगी और इससे आगे भी बढ़ावा मिलेगा। इसके अलावा ये जो एक और इसमें बड़ी बात है। All right, so you were listening to the Union Finance Minister and the MOS Finance speaking to the media about many financial packages being given to the states to tide over the current crisis. All